Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started. We are continuing with the teaching and learning of accounting for not-for-profit organization, and in this specifically today question is a little bit different. Why is it a little bit different? Again, it's different, and also a lot of operations, shastra kriya operations have been conducted on this one, क्योंकि अलग अलग textbook में ये question, this question has been modified. Okay, modified मतलब कुछ गलतियाँ थी. I really cannot tell you and I really do not know कि कौन से textbook में कौन से साल में ये mistakes हुए थे. For explaining today's solution, उसके लिए इसमें जो changes करने चाहिए थे definitely has been done, and like has been informed to you previously, इसका PDF आपको definitely मिल जाएगा. So incorporating the changes and then accordingly teaching the solution is what I am doing right now. Right above this is what it says. What does it say? Let me show you. As at 31st March 2017, that is actually the last day, the following balances have been extracted from the books of Indian Chartered Accountants Recreation Club. Now that's very important. The following balances have been extracted means what? What you see below this list, debit credit, ये एक तरीके से trial balance है. You can think like that. आप definitely ऐसा सोच सकते हो. There is a list on the debit side and there is a list on the credit side. Debit side पे what will you get? Expenses and assets. Credit side पे what are you going to get? Income and liabilities. And after it, at the very bottom, that is somewhere here, okay, is nothing but the adjustments. Not many ikka dukka adjustment आज ये वाले problem के अंदर है. Again, receipt and payment is not given. Above ये जो debit का list है और ये जो credit का list है, वो आप सोच सकते हो एक trial balance है. Year ended above दिया है 31st March 2017. So keeping that in mind, 16-17 becomes the current year, 17-18 and the last year 15-16. Somewhere in your solution, please लिख लेना, so वो थोड़ा help करेगा. Today again, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, there is no RTNL, PTNL. In fact, stock even though stock है, stock का formula आपको नहीं लगेगा. Okay, now just to
clarify a few things before I get started. Solution is not very long, but कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में. ओके, ये अबाव क्या दिया गया है? The following balances have been extracted from the books of Indian Chartered Accountants Recreation Club. अच्छा, obviously chartered accountants are professionals, so there is a club जिसका नाम ये है. ओके, एंड ये क्लब में वो काम नहीं करते हैं. ओके, वो आराम करते हैं, सो टू से. ओके, व्हेन यू से रिक्रिएशन मतलब काम करके थक गए हैं, कोई गेम खेलने के लिए. ओके, या जस्ट फॉर लीजर टाइम पास करने के लिए. ओके, स्ट्रेस अपना रिलीव करने के लिए ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये क्लब में आते हैं. नाउ नॉर्मली इन अ क्लब, इन अ वेल नोन क्लब, देर विल बी अ कैंटीन. मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, कैंटीन. ऑब्वियसली दीज आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर प्रोफेशनल्स. कैंटीन में इनके लिए एक डाइनिंग रूम है और समथिंग लाइक अ रेस्टोरेंट. ओके, सो विद इन द क्लब देर इज अ रेस्टोरेंट. ओके, एंड रेस्टोरेंट में चीज़ें, मसाले खरीदते हैं, मसाले बेचते हैं. वेल, मसाले नहीं बेचते, मसाले से जो पकवान बनता है वो बेचते, तो वो उनके लिए इनकम हो जाता है. Therefore, in this sum, when you read it ahead, you will see a few peculiar items. थोड़े हटके, you will say, अरे सर कितने लेक्चर्स हो गए, ये तो चीज़ हमने आज तक देखा ही नहीं. एग्जाम्पल द फर्स्ट आइटम, स्टॉक इन हैंड. ये कौन सा स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में? दिस इज ओपनिंग स्टॉक. नाउ क्वेश्चन मार्क, किसका है? स्टेशनरी का है, पोस्टेज स्टैम्प्स का है? बिल्कुल नहीं, नॉट ऑफ बोथ, बिकॉज दिस हैज अ रेस्टोरेंट में देर विल बी, ओके, चने का दाल, आटा रहेगा, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, मेनी अदर रॉ मटेरियल जिससे वहाँ पे कुकिंग होता है. और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट गेम खेल के आता है, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग समथिंग, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन ईटिंग समथिंग विल बी सर्व्ड टू हिम. दिस इज द रेस्टोरेंट का, द डाइनिंग रूम विच इज इन अदर वर्ड्स द रेस्टोरेंट का ओपनिंग स्टॉक. एंड जस्ट बिलो दिस is the purchases of that particular restaurant, and just below this is the dining room expenses. Dining room उधर ही है रेस्टोरेंट में. Meaning in this question, okay, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफिनेटली अलग से बनाने का है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेस्टोरेंट, ओके, उसके कोई भी कमाई या खर्चा नहीं आए, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा. ओके, ये ओपनिंग स्टॉक के लिए, ये परचेसेस के लिए, ये डाइनिंग रूम एक्सपेंसेस के लिए वी विल प्रिपेयर अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग अकाउंट. और उसका जो प्रॉफिट होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लब, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इतना जो मैंने आपको बताया, आई हैव गॉट टू क्लैरिफाई समथिंग. व्हाट इज दैट? That when you draw the format, which is this, it looks different. I think if you're a regular person who's been watching all the lectures, ये format तो आपने नहीं बनाया होगा. So I'm very sorry for not telling you in advance, but this is the format that is definitely required. Why? Because income and expenditure में जो dining room है, जो एक restaurant के जैसे काम कर रहा है, उसके income expenses नहीं आ सकते हैं. Okay, so above, if you do notice, trading account, restaurant wala account for the year ending 31st March 17, and a normal account, income and expenditure account for the year ending 31st March 17. So I repeat myself, and why am I repeating myself? For this particular thing, okay, not very big, maybe the restaurant account is for 5 lines, 5 lines चल जाएगा. उसके अंदर there are certain selected income and expenses which will be written there. बाकी on your next page there is no need for an opening balance sheet. Reason, because they have not given anything connected to the capital fund. In our last lecture, if I am not mistaken, capital fund के जगह पे general fund था. Right or no? Okay, आज capital fund है फिर से, but opening नहीं दिया और ढूंढना भी नहीं है, बिकॉज देर इज नो हिंट गिवन अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस. राइट नाउ रीडिंग द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट आइटम,
I'll do my best to keep the cursor so you know exactly मैं बात क्या कर रहा हूँ. स्टॉक इन हैंड, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये रेस्टोरेंट का है. परचेसेस, ये भी रेस्टोरेंट के लिए खरीदारी है. डाइनिंग रूम के खर्चे, देयर विल बी एन एसी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट, देयर विल बी क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, ये सब तो ऑब्वियसली रहेगा ना, सैनिटाइजेशन. हाँ, रेंट अपना नॉर्मल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर. wages also normal income and expenditure. Okay, if they would have said a possible, okay, जो कुक शेफ का सैलरी, तो मैं उसको रेस्टोरेंट में डाल देता. रिपेयर एंड रिन्यूअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. फ्यूल एंड लाइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देयर कैन बी एन आर्ग्यूमेंट और अ थिंकिंग. सो फ्यूल का मतलब मे बी कुकिंग गैस रहेगा, एलपीजी होगा, वो रेस्टोरेंट का खर्चा रहेगा. मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऊपर जो डाइनिंग रूम एक्सपेंसेस दिए हैं उसके अंदर उसके सारे खर्चे आ चुके हैं. बाकी यू मे नॉट बी रॉन्ग. ओके, इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग. आई रिपीट माई सेल्फ, इट्स अ डिबेटेबल थिंग कि सर फ्यूल एंड लाइट रेस्टोरेंट में डालना, नॉट नेसेसरी. ओके, क्लब में भी देर आर गोइंग टू बी सर्टन अदर प्लेसेस जहाँ पे वो फ्यूल एंड लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, नेक्स्ट वन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. मतलब एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, these are all asset. And थोड़ा अजीब है, sundry debtors. Now what do you mean by sundry debtors? Customers. Okay, now see, it is a club के अंदर may be certain eatables जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ओके, उन लोगों को एक लिमिट तक फ्री का रहेगा, मे बी. ओके, बट उनको लाइक ऐसे नहीं कि भाई आप दबा के खाओ, नहीं, बाकी वो चार्जेबल होगा. सो मे बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर समथिंग लाइक अ कस्टमर्स अगर उसका पेमेंट वो नहीं करते हैं. ओके, क्योंकि वो वहाँ पे मेंबर्स है. ओके, मेंबर्स बनने के लिए उन्होंने मेंबरशिप फीस तो दिए रहेंगे, बट उसमें सारा कुछ खाना, पूरा खाना अवेलेबल नहीं रहेगा, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट ज़रूर करना पड़ेगा. हाँ, चाइना ग्लास, कटलरी एंड लिनन, लिटिल बिट अजीब, बट दिस इज स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू द रेस्टोरेंट. खर्चा नहीं है, प्लीज नोट. चाइना ग्लास एंड दी कटलरी एंड लिनन, द फोक एंड द स्पून, ओके, चमचा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक ही बार, अगर वो ऑब्वियसली ना वो मेटल का है, इट कैन बी धो दो और उसके बाद में फिर से यूज़ करो, धो दो, वॉश इट and use it again and again and again. It's an asset. It is an asset. Okay, it is a different thing कि आजकल की दुनिया में disposable, okay, कटलरी भी बनता है. फाइन, तो वो अच्छा, वो एक बार कस्टमर को दे दिया, उसके बाद में आप उसको फेंक सकते हो. बट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लिनन इज द टेबल टॉप, ओके, एंड द सीट कवर्स जो डाले जाते हैं, तो वो तो काफ़ी टाइम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. Billiard table is an asset. Fixture and fittings is an asset. Furniture अलग से दिया है. Fixture and fittings is different, and what do you call furniture is different. And club premises. So there will be some land जहाँ पे, because it's a club, there will be obviously maybe tennis, maybe football, maybe cricket. Okay, कुछ ना कुछ तो outdoor games होने की possibility है. So on the debit side, we have got what? Expenses, रेस्टोरेंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एंड एसेट. देन रिसिप्ट फ्रॉम डाइनिंग रूम. अभी डाइनिंग रूम में खर्चा भी होगा बट कमाई भी होगी. द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हेन दे कम एंड दे ईट, दे डेफिनेटली विल पे. सब्सक्रिप्शन, ये अपना नॉर्मल इनकम है. बिलियर्ड्स रिसिप्ट्स, इट्स अ गेम. ओके, ऑब्वियसली जब भी वो गेम खेलते हैं मे बी हर गेम के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, एंड दिस इज द पेमेंट. उनके लिए पेमेंट है, यहाँ हमारे लिए इनकम. सन्ड्री रिसिप्ट्स, आई डिड नोटिस्ड इन द टेक्स्ट बुक, एंड एक दो जगह पर उसको संडे रिसिप्ट्स कहा गया है. ओके, सो देर आर अ बिट चेंजेस ऑब्वियसली विच हैव बीन डन हियर, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस द सोल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. तो ये नॉर्मल इनकम है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये नॉर्मल इनकम है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज देर हैज़ अ रेस्टोरेंट, देर आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एंड दे आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. कुछ ऐसी खास बात नहीं है उसमें. ग्रांट फ्रॉम इंस्टीट्यूट परमानेंट, सो देर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर क्लब को ग्रांट देता है. ओके, एक हेल्प करता है ताकि वो क्लब स्टार्ट हो सके, बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज़
is also kind of a not-for-profit organization, the Institute of Chartered Accountants of India, and Chartered Accountants are obviously all throughout India. तो ये तो एक club है. There will be many clubs like that. Okay, so to start the institute, that is the Chartered Accountant Institute, also would want कि जो उसके members है, that is the Chartered Accountants, वो भी जब उनको स्ट्रेस होता है तो रिलीव करने के लिए ऐसे क्लब में जाए, तो वो अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, उसको कहते हैं ग्रांट. ओके, ये पैसा आप कोई भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए आगे जाके यूज़ हुआ, क्योंकि ये क्या कहा, टेम्पररी नहीं है, दोबारा आएगा, ये परमानेंट है, ये एक ही बार आया है. ओके, इसके लिए इसको हम फंड के तरह यूज़ करेंगे और ये पैसा अलग रख देगी फंड के जैसे, तो लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे. एंड the last item, income and expenditure. See, income and expenditure means income and expenditure. ये क्या है, ये ओपनिंग डेट है, क्यों देखो ना 1/4/16, सर ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लास्ट ईयर का. ओके, क्या है, इनकम. दिस इज नथिंग. व्हाट डू यू डू ऑफ दी, वेल इनकम मतलब उसमें इनकम का वर्डिंग क्या यूज करते हो, सरप्लस. दिस इज the surplus. okay, and because ये not this year's surplus, वो तो हम लोग को ढूंढना है, we have to search it. ये लास्ट ईयर का सरप्लस था जो कहाँ पे गया होगा, जो कैपिटल फंड में गया होगा, तो हमको भी ये कैपिटल फंड में ही लेके जाना है. ओके, सो इन द कैपिटल फंड विच इज खाली जीरो, दिस विल बी द फर्स्ट आइटम दैट विल बी एडेड, और एक्चुअली ऑलरेडी हैज बीन एडेड, हमको सिर्फ वो प्रेजेंट वहाँ पे करना है. So that is as far as the trial balance is concerned. Come down. On March 31st, 2017, stock of restaurant, closing stock होगा ना, was 960. Again, compared to certain textbook, ये थोड़े changes किए गए हैं compared to the NCERT textbook. Provide depreciation of 60 on fixture and fittings. So we will leave one line for fixture and fittings. 390 on billiard table, we will leave one line for that, and 560 on furniture we will leave. तो 3 depreciation आने वाले हैं. Today the depreciation is not complicated. Last time it was a little complicated, and why was it a little complicated? क्योंकि furniture का कुछ अलग ही बवाल था. It was a different thing. वो last time के lecture में था, आज नहीं है, तो चलो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, ये वाला सब स्टार्ट करता हूँ without the opening balance sheet, because we do not require a opening balance sheet. Capital fund at the beginning खाली है, zero खाली है. So stock in hand, we have a restaurant account, this is the opening stock, तो लिख देता हूँ जी. So right above, if you will notice that 1170 purchases उधर का ही है, रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट के लिए. दैट इज द रीजन मैंने थोड़ा क्लैरिफाई कर लिया है, अदरवाइज देयर विल बी अ लिटिल बिट मोर कंफ्यूजन. 24,660 डाइनिंग रूम एक्सपेंसेस, डाइनिंग रूम रेस्टोरेंट में ही होगा. मेनी अ टाइम्स रेस्टोरेंट्स आर सच, नो दे हैव गॉट एन नॉन एसी एंड एन एसी, ऐसे भी कॉन्सेप्ट होता है ना. हाँ, तो दैट कैन बी अ डिफरेंशिएशन. Dining room expenses 32,370. Rent, wages, repair and renewal, fuel and light, and miscellaneous expenses. ये सब expenses है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. तो मैं एक एक करके एक साथ थोड़ा एंटीथेसिस लगता है, but I will not go back to the question, that's what I'm trying to say. One by one I will write it here. Rent 10,470, wages 18,690, repairs and renewals 5,400, fuel and light 5,280, and miscellaneous full form लिख दिया हमने 4,050. okay, if some amounts have been changed, that obviously change करके ही यहाँ पे लिखा गया है. okay, so miscellaneous expenses के बाद if
आई एम नॉट मिस्टेकन, कैश इन हैंड एसेट, क्लोजिंग, क्योंकि ये 31 मार्च का है, 31 मार्च 2017, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, सन्ड्री डेटर्स, चाइना ग्लास, cutlery and linen, all of that is asset because you use it for multiple years. Billiard table, कितने games खेल सकते हो आप, fixture and fittings, furniture, club premises. So if I'm not wrong, the remaining list is completely एक एक करके एक साथ में. Okay, थोड़ा अजीब डायलॉग है but I do think it does make sense क्योंकि मैं एक एक करके लिख रहा हूँ but एक साथ में लिख रहा हूँ because I'm not going back. So first is cash in hand 560 ऊपर, कैश एट बैंक, ओके 2760. इफ अगर आपके जहन में थिंकिंग में इफ देयर इज अ क्वेश्चन 8500 नॉट 8500 कि व्हाई एम आई लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके दैट्स फॉर द सिंपल रीजन दैट द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, द कैमरा मतलब द मोबाइल विच इज डूइंग द रिकॉर्डिंग, बट इस तरफ पे इज द मॉनिटर, तो आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट द प्रेजेंटेशन इज गोइंग करेक्ट. ओके, सो दैट्स द रीजन मुझे इस तरफ देखना पड़ता है. जब आपसे बातें करनी है तो मैं सीधे देख लेता हूं. सन्ड्री डेटर 2250, चाइना ग्लास, कटलेरी एंड लिनन 600. एवरी रेस्टोरेंट, ओके छोटा बड़ा, दे विल हैव कटलेरी लिनन, मतलब साफ सफाई रखते रहेंगे तो लिनन भी साफ ही होगा. बिलियर्ड टेबल, एवरी क्लब और मैक्सिमम क्लब्स विल हैव, थोड़ा बड़े लोगों का शौक है. ओके, नॉर्मल पीपल नॉर्मली डोंट प्ले. फिक्सचर एंड फिटिंग्स 870, फर्नीचर 4140, क्लब प्रेमाइसिस, देयर इज नो adjustment for club premises, so उधर चला गया 30,000. Anything else? Well, the debit side, if I'm not wrong, खत्म हो गया. And about credit side, receipt from dining room, income but of the restaurant, तो रेस्टोरेंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ, I'm writing it on the credit side. Restaurant, dining room, I'm considering it to be the same, otherwise you will be a little bit confused. 87,660. सब्सक्रिप्शन, ये हमारा नॉर्मल इनकम है, इनकम में आता है विदाउट एनी RTNL का इशू. 9450. बिलियर्ड रिसिप्ट 7300, इनकम 7300. sundry receipts 410, sundry receipts 410. interest on fixed deposit 270, interest on fixed deposit. Today there is no hidden adjustment, कुछ hidden adjustment नहीं है. अगर percentage आता है then yes there is a possibility of a hidden adjustment. Next, sundry creditors, grant from institute. Grant is like a help, financial help from the institute, chartered accountants institute. ये दोनों will come as a liability, which is what I just now wrote. So it's like a fund. An income and expenditure which was on the credit side. Credit में तो income होगा, income. So it's surplus, it's surplus. Therefore capital fund में ऊपर गया opening balance. Current year surplus तो we will find, हम खुद ढूंढेंगे और फिर जाके उसमें ऐड करेंगे, तो वो total surplus हो जाएगा, total surplus. Okay, before I go to the adjustments which are barely इक्का दुक्का adjustment है. During the lecture, if there is any complications with the audio or maybe the video, anything difficult, okay, anything that you notice, आप obviously ना आप question के बारे में कुछ notice करोगे तो वो comment में तो बता ही देना. but अगर सब audio clear नहीं था, ये बात हमको सुनाई नहीं दी,
समझा नहीं, ओके, टेक्निकलिटीज भी अगर डिफिकल्टी रहेगी, so do let us know in the comment box, because that is the only way we can, okay, what is being done on the platform, that is on this particular YouTube channel. We are trying our best to cater to as many chapters of accountancy as is possible. So whether it is a Maharashtra board may 11th 12th standard or Mumbai University, okay, specifically to this 13 14 15 standard, or the CBSE board. Now there are variety of subjects related to accounts and finance, काफ़ी सब्जेक्ट्स है, और उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की हम कोशिश करते हैं, ओके, सो इन दैट वी ट्राई आवर बेस्ट दैट द रिकॉर्डिंग हैपन्स एंड द लेक्चर इज पुश्ड टू यूट्यूब. तो हमेशा पूरा लेक्चर को हम ऑडियो वाइज चेक नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी अगर गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बता देना. डू लेट अस नो, सो वी विल डू आवर बेस्ट दैट इफ़ इट्स पॉसिबल कि वो जो पार्ट है जो आपको सुनाई नहीं दिया उसका एक्सप्लेनेशन हम लिख कर दे दे, और मे बी टू रीशूट इट एंड समहाउ एडिट इट एंड पुट इट बैक. ओके, सो जो भी कंप्लेंट होगा आपका, ओके, सजेशंस रहेंगे, वो प्लीज़ बता देना. At the bottom, on 31st March 2017, stock of restaurant was 960. ये closing stock हो गया because 31st March का stock है. So right above आप देखोगे closing stock, which is quite unique because this particular sum had a canteen and a restaurant and a dining room, जो एक ही है 960. Again, it is differently given in the textbook, but we made a change and accordingly I have solved it. So it's here and here. Next is depreciation. There are 3 depreciations, first, second and third. Provide depreciation 60. ये किस पे है? Fixture and fittings. Fixture and fittings. And thankfully, it's solved and given. We only have to write it. Depreciation 60. Subtract करके outer column 810. Second effect, expenditure side, there it is 60. This is on fixture and fittings. The next depreciation 390 on billiard table. तो चलिए जी, billiard table कहाँ पर है? ये ऊपर है, उसका 390, not 10%, 5%, 6%, डायरेक्टली 390 माइनस करके आउटर कॉलम 1680. देन सेकेंड इफेक्ट बताना मैं भूल गया, 390. लास्टली फर्नीचर पे 560 है डिप्रिसिएशन, फर्नीचर पे जो ये ऊपर है, and minus 560 and the outer column 3580. Depreciation on furniture 560. Then थोड़ा खुशियों का माहौल होना चाहिए क्योंकि हमने सम कंप्लीट किया, टोटलिंग बाकी है जो अभी कर रहे, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी. एंड बाय दैट ऊपर आई मीन द क्रेडिट टोटल विच इज जो ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो उसका एक प्रॉफिट आएगा 88,620. द डिफरेंस अबाउ दैट 3420. एनसर्कल होना चाहिए, ओके, हो गया, बाद में हो गया. देन आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो, ओके, या प्रॉफिट ऑफ द रेस्टोरेंट बोल सकते हो. पिक इट अप फ्रॉम देयर एंड ब्रिंग इट टू काइंड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पीएनएल होता है ना, काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट, प्रॉफिट ऑफ रेस्टोरेंट, ऑफ डाइनिंग रूम 3420. एंड ऑब्वियसली इन दिस अकाउंट ऑफ आस, ओके, सो डोंट वरी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जस्ट ट्राइंग टू से ये जो अकाउंट हमारा है दैट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसमें नॉर्मली सरप्लस आएगा, ओके. क्रेडिट में क्या टोटल है 47,850.
and accordingly you will get a surplus 2950. इनकम ओवर एक्सपेंस क्या करें? वेल ले लो 2950 सरप्लस, और वो ऊपर, वेल अगेन आई डू माई बेस्ट with the cursor the pointing takes a little time. सरप्लस ऐड हो गया. ओके, देयर इज मतलब टू मच ऑफ टाइम मुझे स्क्रीन पे उस तरफ देखना पड़ता है. हाउ मच इज इट? 2950 ऐड करके प्लीज पुट इट अप इन द आउटर कॉलम. 4330 एंड देन द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी एंड एसेट जो आना चाहिए अगर हमारी मेहनत और सोल्यूशन सेम है तो, वेल नॉट सेम, करेक्ट है तो सेम आएगा. 51,700. That's the solution. We have a few more lectures remaining because there are questions that come for you of multiple variety, 1 mark, 2 mark, 4 mark, 8 mark. Okay, तो हमने maximum जो major questions आते हैं, that is what I have covered up. Okay, इसके जो what the questions that can come in a modified format or the questions that can come as a 1 or 2 or 3 mark sum, we still have to cover it up, but they are a part of this entire solution if you have understood the entire explanation. Okay, आपको क्या करना है? आप प्लीज़ लेक्चर को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए. ओके, उसके अलावा please share the information of the channel and the content on the channel with your friends. Okay, you are our best marketing tool. Okay, tool kit जो होता है ना इस चैनल के लिए आप ही हो. ओके, आई कैन नॉट हैव एनीबडी एल्स हु ऑन द रोड चिल्लाता बैठेगा कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे CBSE की पढ़ाई होती है. आई कैन ओनली एक्सपेक्ट यू गाइज टू बी डूइंग इट. सो प्लीज़ डू दैट. The subscription will definitely help in the growth of the channel. Okay, share the videos with everyone that you want to, and अगर कोई comments रहेगी, like I told, the comment section can be used to even pinpoint कि सर यहाँ पे ऑडियो गलत था, यहाँ पे वीडियो के रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था कि हमको वो दिखाई ही नहीं दिया. ओके, तब तक के लिए अगली बार तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली मेम्बर्स, stay protected, and good day to all of you, and God bless till the time we meet again. Bye.